Good morning. Here in this live lecture, we shall discuss theorem on nth differences. We shall study the theorem on nth differences. Here in this first unit, up till we have studied the differences of functions. That is first forward difference, second forward difference, third forward difference, how to find out the differences of a higher order. And by using the differences of a higher order, we can obtain delta f of x, delta 2 f of x, delta 3 f of x. Also, we have studied the difference table, how to find out the higher order differences by using a difference table. Actually, by using the difference table, it is an easy process to find the higher order differences. Now, today we shall discuss one important theorem based on nth differences. One important theorem. मुस्कान शेख, प्रणविती, श्रद्धा जाधव, साक्षी कदम, मयूरी, जानवी ढगे, कृष्णा डोकाडे, मोनल बरुळे, आकाश, निखिल पवार. आपले आता रेग्युलर लेक्चर होतील. लक्षात ठेवा, प्रत्येकाने सर्व लेक्चर्स आपले रेग्युलर होतील. ओके, तर आपण थेरम घेऊ. अगोदर थेरमची स्टेटमेंट. वी शॅल डिस्कस द थेरम अँड इट्स स्टेटमेंट. थेरम statement. Actually, this is a very important theorem. The nth differences of a rational integral function or it is called as a polynomial function. Polynomial of the nth order of the nth degree are constant when the values of the independent variable when the values of the independent variable are at equal intervals. This is the important statement of one important theorem. The nth differences of a polynomial, we have to prove that, or we can write this statement of the theorem in such a way that prove that you have to write the theorem in the examination, whose statement is prove that the nth differences of a polynomial of nth degree are constant. And it is important to note that the value of independent variable are at equal interval. अगर हमारे पास nth डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है and n plus 1th differences goes to 0.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको अच्छी तरह से एक बार समझाता हूँ. सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11. स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल, सभी को अभी इसकी डिग्री बताना है. नाउ यू टेल मी विच इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. चलो रे बताओ, फास्ट बताओ. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको बताना है. तो डिग्री इज 4. डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म विच गिव्स द डिग्री. डिग्री इज 4. अभी देखो हमें क्या थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n होती है तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है. इसका मतलब फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 डिग्री इज 2, so definitely we can say that its second difference is always constant, and third, fourth, all remaining differences, n plus 1 differences goes to 0. And it is essential that अभी देखो कांस्टेंट का डिफरेंस कभी भी 0 होता है, याद रखना है. तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होते हैं n प्लस 1 डिफरेंस जो भी होते हैं वो 0 होते हैं. सो आपको ये स्टेटमेंट याद अच्छी तरह से रखना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n होती है तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है. ये हमें प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दिस. कांस्टेंट मींस व्हिच इज फ्री फ्रॉम x. Constant means which is a free from x, which has a number, real number, 4, 5, 6, whatever may be, it has a real number. Its nth difference is a real number. Okay, now we shall prove this theorem. अभी ये theorem हमें prove करना है. Proof. Let the rational integral function or we can write a polynomial function of nth degree in terms of x b. First of all, we have to consider the rational integral function of nth degree. What is that? See here, we have to suppose f of x is equals to ये suppose x raised to n, ये means constant coefficient, b x raised to n minus 1, c x raised to n minus 2, plus dot 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 plus last but one term is kx and last term is l. Suppose this is a polynomial. Now we consider this polynomial of degree n. इसकी डिग्री क्या है? n. और यहाँ पे ये B.Sc डॉट 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 ये जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x. So degree, first of all we have to consider n degree polynomial is f of x is equals to. Now what we have to show that its nth difference is constant. That means we have to prove that delta raised to n f of x is a constant. That is the term which is free from x. म्हणजे इसका जो nth difference है delta raised to n f of x is a term which is free from x. That means constant. Now first of all we have to take where, यहाँ पे मैं लिखता हूँ where ये कॉमा बी कॉमा सी डॉट 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 के कॉमा यल आर कॉन्स्टेंट्स एंड ये मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0.
अगर ये 0 होता है ना तो nth डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहता है, वो n-1th डिग्री पॉलिनोमियल होता है. So ये must not be equals to 0. Now we know that we have, हमें nth डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डिफरेंस निकालना होता है, बाद में सेकंड डिफरेंस निकालना होता है, उसी तरह से जनरलाइज करके nth डिफरेंस की तरफ जाना होता है. ओके, वी हैव डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, चलो रे स्टूडेंट्स मुझे फार्मूला बताओ, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डेल्टा एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. अभी f of x plus h minus f of x means what? We shall write this as f of x plus h. F of x means this term. Delta f of x can be defined f of x plus h minus f of x. F of x is already known. F of x plus h means we have to replace x by x plus h. So we will get a into x plus h raised to n plus b into x plus h raised to n minus 1 plus c into x plus h bracket raised to n minus 2 plus dot 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 plus k into x plus h plus l. This is f of x. We have to calculate delta f of x. What is meant by delta f of x? Delta f of x means f of x plus h minus f of x. This is f of x plus h. This bracket is called f of x plus h minus f of x means already we have known f of x means this term. So ax raised to n, bx raised to n minus 1, cx raised to n minus 2 plus dot 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 plus kx plus h. अभी देखो इसको सॉल्व करना है तो क्या होता है, अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे ये कॉमन निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकाल दो, ये मीन्स ये इन अ ब्रैकेट वी विल गेट x plus h bracket raised to n minus x raised to n प्लस, अभी देखो सेकंड टर्म से यहां से b भी कॉमन निकाल दो, b ना ब्रैकेट तो क्या होता है देखो x plus h raised to n minus 1 minus x raised to n minus 1 प्लस c ना ब्रैकेट x plus h raised to n minus 2 x raised to n minus 2 प्लस डॉट 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 प्लस, अभी देखो क्या होता है k ना ब्रैकेट x plus h minus x, यहां से यहां तक मैं कॉमन निकाल रहा हूं और यहां पे l है L minus L. Okay, then what will happen? So we get, again we shall write this a into x plus h bracket raised to n minus x raised to n, b into x plus h raised to n minus 1 minus x raised to n minus 1 plus c into x plus h raised to n minus 2 into x raised to n minus 2 plus dot 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 plus, ये देखो यहाँ पे x x कैंसल होता है तो kh होता है, क्या होता है kh होता है और l कैंसल होता है, द लास्ट टर्म इज अगेन kh, एक टर्म कांस्टेंट kh होती है, x टर्म लास्ट जो kx था, लास्ट टर्म kx था उसमें से x रिड्यूस हो गया मींस कांस्टेंट टर्म. अभी देखो इसको हम शॉर्टली वी कैन राइट दिस एज देयरफॉर व्हिच इज इक्वल्स टू
ये इंटू एन इंटू एच रेस टू एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस, इसको अभी सॉल्यूशन करने के बाद ये आता है ये इंटू एन इंटू एच इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन. This is delta f of x. Actually, this is the delta f of x. Then b dash x raised to n minus 2 plus c dash x raised to n minus 3 plus dot dot dot. We can write k dash x plus, suppose this constant term is called as a L dash. Last but one is k dash. आता तुम्हाला वाटेल how will we get, आता याच्यावरने हे कसं आला, आपको मैं यहाँ पे एक्चुअली ये एज इट इज, देन एन एच एक्स रेस टू एन माइनस वन, हाउ वी कैन राइट. तो मैं इसको किसी अलग जगह पे सॉल्व करके ये सॉल्यूशन मेथड बताता हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. देखो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ. हाउ टू सॉल्व दिस, ये देखो ये सॉल्व करना, ये इंटू एक्स प्लस एच रेस टू एन माइनस एक्स रेस टू एन, और क्या सॉल्व करना है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच रेस टू एन माइनस वन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस इन दिस वे. अभी मैंने क्या लिखा है, इस टर्म की जगह पे ये एन एच एक्स रेस टू एन माइनस वन लिखा है. हाउ विल गेट, सी दिस, व्हाट इज द फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन. हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन. इसका सॉल्यूशन क्या होता है रे स्टूडेंट्स, बताओ मुझे. ये रेस टू एन प्लस एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन इंटू बी, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल ए रेस टू एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर. इस तरह से लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन मीन्स, इसका मतलब होता है एक्स रेस टू एन प्लस एन इंटू, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब होता है एच, तो एन दिस एन, ये मीन्स एक्स, बी मीन्स एच, एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू बी मीन्स एच. सेकंड टर्म इस तरह से लिखना है, डॉट 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 प्लस ये देखो एक्स रेस टू एन एज इट इज, यहां पर भी अभी देखो बी रेस टू, तो क्या होता है एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू एच प्लस डॉट 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 प्लस माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन. यहाँ पे माइनस है, देखो लास्ट टर्म माइनस है ये एज इट इज. तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन कैंसिल होता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म क्या आती है, ये एन एच एक्स रेस टू एन माइनस वन. ये देखो ये टर्म आ गई. इस तरह से ये टर्म हमारे पास आ गई, ये एन एच एक्स रेस टू एन माइनस वन. अभी एन माइनस टू की टर्म देखो, यहाँ पे एक्स रेस टू एन माइनस वन कैंसिल होता है, एक्स रेस टू एन माइनस वन कैंसिल होता है, तो यहाँ पे एन माइनस टू की टर्म आती है, और बी इंटू अदर टर्म है उसको हम बी डैश लिखते हैं. यहाँ पर भी एन माइनस टू की टर्म आती है, तो उसके जो भी कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको हम बी डैश लिख के बी डैश कंसिडर करते हैं. देखो ये यहाँ पे एन माइनस टू की टर्म दोनों कॉमन निकाल के वी कंसिडर दैट बी डैश एक्स रेस टू एन माइनस टू. इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन. इसी तरह से ये देखो, इसी तरह से हम सॉल्यूशन के बाद ये टर्म लेते हैं. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वी कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ दिस इज इक्वेशन, ओके वी कैन in 1 minute. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इस दिया जो फर्स्ट डिफरेंस है उसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं.
where B dash comma C dash comma dot 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 K dash comma L dash are the constant coefficients of independent variable x. Okay, no problem. Now we shall discuss the second difference. अभी क्या करना है आपको? second difference calculate करना है. So we get therefore the first difference. Thus the first, अभी देखो ये first difference है, उसकी डिग्री कितनी है रे? फर्स्ट डिफरेंस की n-1 है. जो f of x था उसकी डिग्री n थी, फर्स्ट डिफरेंस है तो n-1 है. फर्स्ट डिफरेंस की n-1 है. सो देयरफॉर द फर्स्ट डिफरेंस is a function, is a polynomial function whose degree is n-1. ओके, म्हणजे फर्स्ट डिफरन्स असेल तर n-1 आहे. नाउ वी शॅल कॅल्क्युलेट टू फाइंड द सेकंड. नाउ we have to find second difference. थेरम खूप महत्वाचा आहे पहा. So delta 2f of x. Now we shall calculate the second difference. Delta 2f of x means how to calculate delta f of x. Okay. Delta f of x means f of x means f of x plus h minus f of x. Again delta f of x plus h minus delta f of x. अभी हमारे पास डेल्टा f of x है, ये जो को डेल्टा f of x है. Delta f of x means this. Delta f of x plus h means we have to add x plus h here. मग आता delta f of x means replace x by x plus h. So we get x raised to n-1 x plus h raised to n-1 plus b dash x plus h raised to n-2 plus c dash, in this way c dash x plus h raised to n-3 plus dot dot dot. How we can write? We can write this as last k dash of x plus h plus k dash of x plus h plus l dash minus delta f of x means an h x raised to n-1 b dash of x raised to n-2 c dash of x plus x raised to n-3. ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. x raised to n-3 plus dot dot plus k dash h plus l dash. So we get आता कॉमन काढा. We can take the common from this term. So we get an h in a bracket x plus h raised to n-1 minus x raised to n-1 plus
बी डॅश 1 मिनिट, 1 मिनिट. हॅलो, कार्ड बघून सही करून द्यायचं. ओके ओके. हा, बी डॅश इन अ ब्रॅकेट x plus h raised to n minus 2 minus x raised to n minus 2 plus dot 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 in this way plus kh k dash h l dash कैंसिल होता है. अब फिर से अभी इसका सेम प्रोसेस करना है इसी तरह से प्रोसेस करने के बाद क्या आता है देखो. फाइनली इसका सॉल्यूशन लेने के बाद क्या आता है, वी कैन राइट दिस एज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. सो ये n माइनस 1 इंटू एच x raised to n minus 2 plus b double dash x raised to n minus 3 plus c double dash x raised to n minus 4 plus dot 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 plus k double dash. तो इस तरह से ये सेम होता है. So we can write this as, so delta 2f of x is equals to n minus 1 h x raised to n minus 2 plus, same I shall write this, b double dash x raised to n minus 3 plus dot 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 plus k double dash. अभी देखो दिस इज अ सेकंड डिफरेंस. यहाँ पे देखो सेकंड डिफरेंस है. सेकंड डिफरेंस है तो उसकी डिग्री कितनी है रे स्टूडेंट्स, अभी बताओ मुझे. यहाँ पे सेकंड डिफरेंस है, उसकी डिग्री कितनी है. तो thus we get the therefore where a dash where b double dash c double dash dot 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 k double dash be the constant coefficients. Constant coefficient. Here the second differences here the second differences of this polynomial function is a constant. यहाँ पे जो second difference है, second differences of the polynomial function having a degree n minus, second differences of the polynomial function, second differences is the polynomial function whose degree is n minus 2. अभी देखो जनरलाइज करना है. देखो अगर फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन whose degree is n minus 1. second difference is a polynomial function whose degree is n minus 2. तो nth डिफरेंस है. सिमिलरली by continuing the process up to nth differences, then what you will get, a into n minus 1 n minus 2 dot 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 2 into 1 h raised to n. यहाँ पे h स्क्वायर आता है. देखो h स्क्वायर आता है, यहाँ पे h स्क्वायर. यहाँ पे h फर्स्ट डिफरेंस में h आता है, सेकंड डिफरेंस में h स्क्वायर होता है. h स्क्वायर ये भूल गया. देखो h स्क्वायर
So h raised to n into x raised to n minus n, nth difference. So we will get a into n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 up to 1 into x raised to n into x raised to 0 means 1. So this can be written as a into n factorial into h raised to n. So the final answer is delta raised to n f of x is equals to a into h raised to n into n factorial. A into h raised to n into n factorial. Now see this. This is a nth difference having a term in which x term is absent, which is free from x. That means it is a constant. So this proves that therefore the nth difference is constant. nth difference is constant. तो यहाँ पे एंड हेंस प्रूव्ड, ये देखो ये थ्योरम बहुत अच्छी तरह से करना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, बाय प्रोसेस फर्स्ट डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एन एच एक्स रेज टू एन माइनस 1। सेकंड टर्म वी कैन कैलकुलेट ये एन एच इंटू द डिफरन्स, पुन्हा याची व्हॅल्यू एन एच येते, एन माइनस 2 इंटू एच, एच इंटू एच म्हणजे एच स्क्वेअर येते. You can solve this, we will get this term. Again this first term is very important. A n into n minus 1 into h square into n minus 2. Second and third term we will consider as a general term. So we will get the second difference a into n minus 1 into h square n minus 2. This shows that the second difference is a polynomial of degree n minus 2. Continuing up to n, आता nth term पर्यंत घ्या. सेकंड डिफरन्स मध्ये एक्स रेस टू एन मायनस 2 होता, तसं nth डिफरन्स मध्ये एक्स रेस टू एन मायनस एन होतो. सेकंड डिफरन्स मध्ये एक्स स्क्वेअर होता, तो nth डिफरन्स मध्ये एक्स रेस टू एन होता. आणि डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये एन मायनस 1 एन मायनस 2 अप टू 1. So it can be written as n factorial. So we'll get delta raised to n f of x is equals to a into h raised to n into f of x. Okay. तो नोट लिखना है आपको, नोट फर्स्ट द nth डिफरेंस ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल is constant. Second note, n plus 1 and higher order differences. The n plus 1 and higher differences of nth degree polynomial are zeros, are zero. Higher differences means n minus n plus 1 n plus 2 n plus 3, higher differences zero होते हैं, देखो यहाँ पे. थर्ड, तीसरा, if f of x is a polynomial of degree n, if f of x be a polynomial of degree n, then its nth difference is delta raised to n f of x is equals to a means first term
into h raised to n. H means the difference, you know, h means difference into n factorial. See this, this is a formula for delta raised to n. Here a means the coefficient of first term, a means the coefficient of nth degree term, h means the interval of differentiation, which is equal interval. We have seen in the theorem, which is equal interval, and n factorial n means degree. These are the three notes. Okay, now फोर्थ, अभी इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है. अगर nth डिफरेंस ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल का कांस्टेंट होता है तो इसका कॉन्वर्स हम ट्रू नहीं ले सकते. यानी कि अगर nth डिफरेंस कांस्टेंट है, nth डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसका nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है, ये भी हम नहीं बता सकते. सो वी कैन राइट द कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम is also true. Means अगर nth डिफरेंस, सी दिस, अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है, सी दिस, अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है. तो हम कॉन्वर्सली ये भी बता सकते हैं अगर nth डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसका पॉलिनोमियल डेफिनेटली nth डिग्री हो सकता है. ओके, सो द कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम अबोव इज आल्सो ट्रू. ओके, ये 4 नोट आपको अच्छी तरह से लिखना है. सर्वांनी प्रेझेंटी खूप महत्वाची आहे रे, सर्वांनी प्रेझेंट राहणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. प्रॉब्लेम, नाउ वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लेम्स. First problem, evaluate delta raised to 5f of x, where f of x is equals to 3x raised to 5 minus 2x raised to 4 plus 4x minus 11. देखो, this is a given polynomial function and we have to evaluate fifth difference of that function. So given function is चलो रे स्टूडेंट्स, अभी सभी बच्चों को यहाँ पे इसकी डिग्री बताना है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री बताना है. सभी स्टूडेंट्स को इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री बताना है. मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, जो भी आंसर देते हैं उसकी अटेंडेंस लेने वाला हूँ. खाली जिनके आंसर आने वाले हैं उसी के अटेंडेंस लेने वाला हूँ. तो सभी बच्चों को इसका आंसर देना है. जो भी आंसर अभी दे देंगे उसका मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ. ओके, नाउ सी हियर, गिवन फंक्शन इज f of x is equals to 3x raised to 5 minus 2x raised to 4 plus 4x minus 11. अभी देखो यहाँ पे हमें फिफ्थ डिफरेंस निकालना है. यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस निकालना है. फिफ्थ अगर डिफरेंस निकालना है तो 5 टाइम्स डिफरेंसेस के डिफरेंस लेना है. लेकिन यहाँ पे हमें ये थ्योरम निकालना है. We have to find out the theorem. We have to prove this theorem by using the method of differences. We have to calculate this theorem by the method. Hello sir. देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री 5 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 5 है. तो कैलकुलेट करो स्टूडेंट फॉर्मूला. अबे अरे मूर्ख है का रे, हा? किती वेळा फोन करतो रे, हा? हा ते आत्ता सांगतो का, मग तुला समजू नये का? तिथं बने सरला फोन लाव, मला नाही सांगू नको. किती वेळा सांगायचं, आता परीक्षा सुरू झाल्यावर सांगतात का रे?
हा, बरं माझं इथं लेक्चर चालू आहे, मग फोन करायला लागला. मग तुला अगोदरच समजून नाही का रे? तिथं बने सरला जाऊन बोल. हा ठीक आहे. f of x is equals to 3x raised to 5 minus 2x raised to 4 plus 4x minus 11. Here n is equals to 5. अभी देखो यहाँ पे n कितना है, देखो यहाँ पे n is equals to 5 है. So we will get 1 minute. हाँ, मी अटेंडन्स घेतो रे स्टुडंट्सची. सो हियर वी शैल राइट द वैल्यू f of x. यहाँ पे कितने है रे स्टूडेंट्स, बताओ मुझे. n is equals to 5, a is equals to 3, and a constant u of interval we have to consider as h is equals to 1. So we have, what is the formula? Delta raised to n f of x is equals to, what is the formula? चलो रे स्टूडेंट्स, अभी मुझे फार्मूला बताना है. डेल्टा रेज टू n f of n. How to calculate this? Now calculate this. So it can be written as n a into n into, sorry, a into h raised to n into n factorial. So delta raised to 5 f of x is equals to, a means 3, h means 1 raised to n, and n factorial means 5 factorial. H raised to 5 means again 5 factorial. Calculate this. 3 into 1 into, calculate the value of 5 factorial. चलो रे स्टूडेंट्स, अभी मुझे बताओ वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल क्या आती है वैल्यू. यू हैव टू राइट. नाउ कैलकुलेट दिस. दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला we can find the fifth difference is constant. A means first term, h means the interval of differencing. So calculate the fifth difference. Okay. Okay, see this. तर 5 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू 120. ओके, नो प्रॉब्लेम. 3 into 120, 360. This is the fifth difference, and which is a constant. So इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है. सेकंड प्रॉब्लम, वी शैल डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम. डेल्टा क्यूब, evaluate delta cube 1 minus x, 1 minus 2x, 1 minus 3x. Now how to calculate this? Given that let f of x is equals to 1 minus x, 1 minus 2x, 1 minus 3x. Now multiply this. 1 into 1 means 1, 1 into 2x means minus 2x, minus x plus 2x square into 1 minus 3x. That is 1 minus 3x plus 2x square. चला रे कैलकुलेट करा स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है. वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो अगेन वी कैन राइट 1 into 1 means 1 minus 3x. 3x into 1 means minus 3x plus 9x square, minus 2x square plus 2x square minus 6x cube.
बराबर है क्या स्टूडेंट्स? देखो अभी, सो वी गेट 1 माइनस 6x प्लस 11x² माइनस 6x³ बरोबर आहे का रे? सी दिस. सो वी कॅन राईट f of x is equals to minus 6x³ plus 11x² minus 6x plus 1. अभी बताओ मुझे इसकी डिग्री क्या आहे स्टुडंट्स? जे ऑनलाईन आहेत ते सांगायचं मला. नाव वी हॅव टू, जे विद्यार्थी ऑनलाईन आहेत त्यांनी सांगायचं याची डिग्री किती आहे काय नाही. हिअर n means degree is equals to minus n is equals to 3. A means the highest जी टर्म आहे डिग्रीची टर्म आहे nth टर्म असलेल्याचा कोएफिशिएंट. A means the first term that is a -6. Again h means 1. सर्व विद्यार्थ्यांनी सांगायचं पहा मी प्रेझेंट घेतोय. सो वी हॅव टू राइट दिस. यहाँ पे a is equals to 3 है, सॉरी n is equals to 3 means degree of this function is 3, that is a is equals to -6, h is equals to 1. so we have to calculate, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? we have to calculate its third difference. Now we have to calculate the third difference. यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? थर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है. 1 minute. एक्चुअली सीरीज परत एकदा सांगतो. f of x is equals to this product of these. Actually we have to find out the third difference. Actually we have to find out the third difference. थर्ड डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है. Which term? In a bracket x minus 1, x 1 minus x, 1 minus 2x, 1 minus 3x. So consider f of x is equals to 1 minus x, 1 minus 2x, 1 minus 3x. Then we have to find out the value of. Then we have to find out the value of what we have to calculate. Actually we have to calculate the value of, see this. हाँ, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है थर्ड डिफरेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. हेलो, हाँ फोटो नाहीत का? त्याला सांगा त्याचा भावाचा आहे, त्याला तोपर्यंत नंबर दे म्हणा, फोन नंबर दे म्हणा, हां त्याला शीट नंबर दे म्हणा, बाकी पुन्हा बघू. हां हां ओके ओके. हाँ तो देखो यहाँ पे वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द फर्स्ट. आज विद्यार्थ्यांना आज परीक्षा चालू असल्यामुळे, एक्झाम चालू असल्यामुळे खूप प्रॉब्लेम यायला लागले. सारखे विद्यार्थी प्रॉब्लेम विचारायले. वन मिनिट रे. हाँ तर h is equals to 1. So we have to use the formula. What is that formula? We have calculate करा रे आंसर. Delta raised to n f of x is equals to a into h raised to n into n factorial. चला रे स्टूडेंट्स, now you tell me what is the value of this. इसकी वैल्यू अभी निकालो. कैलकुलेट करना है आपको, वैल्यू सभी स्टूडेंट को कैलकुलेट करना है. a की वैल्यू -6 है, h की वैल्यू आपको 1 कंसीडर करना लेना होता है. इक्वल इंटरवल है वॉट एवर में भी. सो यू कैन टेक द वैल्यू एंड नाउ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस आंसर. सभी को इसके आंसर की वैल्यू आपको बताना है. नाउ यू टेल मी. चलो मैं तब तक प्रेजेंट ही लेता हूं. हाँ ओके ठीक है. तर आता डेल्टा क्यूब n मीन्स 3, डेल्टा 3 f of x is equals to, how to write? a means -6,
H means actually 1 raised to n. H means the interval of differences we consider as a 1 or constant, and H 3 factorial. So minus 6 into 3 factorial, n means 3. So minus 6 into 3 factorial, that is equals to minus 36. This is therefore delta cube 1 minus x, 1 minus 2x, 1 minus 3x is equals to minus 36. ओके, इस तरह से ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया. नाउ वी शैल फाइंड द थर्ड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम, delta raised to evaluate delta raised to n e raised to ax plus b, where a and b are constants. Where a and b are constants. See this. Now we have to calculate the first difference, second difference up to this. Calculate this first difference, second difference. Let f of x is equals to e raised to ax plus b. अभी nth difference निकालना है. Therefore f of x plus h is equals to e raised to a in a bracket x plus h plus b. So we can write this as e raised to ax plus ah plus b. Now first of all calculate the first difference. आपको क्या करना है? First difference निकालना है. Delta f of x is equals to f of x plus h minus f of x. तो यहाँ पे क्या होता है देखो, f of x plus h means what? We can write this as e raised to x ax plus ah plus b minus e raised to ax plus b. That means we can take the common. E raised to ax plus b is the common term. Then the remaining term is e raised to ax plus b. E raised to ah plus 1, e raised to ah, e raised to ah minus 1, but h is equals to 1. We have to consider h is equals to 1. So e raised to ax plus b into e raised to h minus e raised to a minus 1. Since this is h is equals to 1, this is a delta f of x. अभी देखो हमें सेकंड डिफरेंस निकालना है. How to calculate the second difference? Delta to f of x. Delta to f of x. अभी e raised to f of x का delta 2 निकालना है. Okay. f of x means e raised to a plus h. म्हणजेच इथं again delta 2f of x is equals to delta 2f of x is equals to delta of delta f of x. Delta f of x means what? E raised to x, e raised to ax plus b. Put this value, e raised to ax plus b into e raised to a minus 1. This is a constant term, so we get e raised to a minus 1 delta of e raised to ax plus b. परंतु delta of e raised to ax plus b, f of x means e raised to ax plus b, delta e raised to f of x means this term. So we consider this as a equation number 1. So we can write
e raised to a minus 1 into e raised to ax plus b into e raised to a minus 1. So delta 2f of x is equals to e raised to a minus 1 bracket square e raised to ax plus b. In this way, अभी देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है तो e रेस टू a माइनस 1 इंटू e रेस टू ax प्लस b होता है. सेकंड डिफरेंस है तो e रेस टू a माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू e रेस टू ax प्लस b होता है. थर्ड डिफरेंस, therefore similarly delta cube f of x is equals to e raised to a minus 1 bracket cube e raised to ax plus b. And in this way, in general, dot 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 delta raised to n f of x is equals to e raised to a minus 1 bracket raised to n into e raised to ax plus b. Hence, delta raised to n f of x means e raised to ax plus b, which gives e raised to a minus 1 bracket raised to n into e raised to ax plus b. And this is the final answer. अशा पद्धतीनं हे त्याचं फायनल आन्सर होतं. ओके, सो वी कॅन राईट दिस वे, वी कॅन आन्सर दिस. ठीक आहे. सो नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. वन लास्ट प्रॉब्लेम वी हॅव टू टेक. आता लास्ट प्रॉब्लेम आहे, तो लास्ट प्रॉब्लेम. एच म्हणजे 1 असतो, लक्षात ठेवा. एच म्हणजे 1 घ्या. इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग इज 1. ओके. Now next, evaluate third problem. Evaluate delta of ux into vx. Answer, delta of ux into vx which is equals to, अभी इसकी वैल्यू निकालना है, x plus 1, x plus h, h म्हणजे 1 घ्या, ux plus h, vx plus h minus ux into vx. f of x plus h minus f of x means the first difference, but h is 1, so we can write u of x plus 1 इथं दिलेला आहे प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये h इज इक्वल्स टू 1. इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग इज 1. लक्षात ठेवा, इथं हेडिंगच आहे इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग. h ची व्हॅल्यू 1 का घेतो, इव्हॅल्युएट x रेज टू 5. आणि इथं कारण दिलेलं आहे इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग. इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग इज 1. प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग 1 दिलेला आहे, लक्षात घ्या. सो x u into v of x plus 1 minus ux into vx. Now see here, addition आणि subtraction करा. इथं addition काय करणार, subtraction करणार, minus ux plus 1 vx. ux plus 1 into vx plus 1. Subtraction करा, ux plus 1 vx. हे subtraction, addition ux plus 1 vx. This is addition and subtraction of the term, minus ux vx. Now take out the common from first two term, ux plus 1 in a bracket. इथं interval of differencing is given since h is equals to 1. तर इथं ux plus 1 vx plus 1 minus vx plus इथं ux vx कॉमन काढा, ux plus 1 minus ux
So it is given by ux plus 1, vx plus 1 minus vx, it is also denoted by delta vx plus vx into delta ux. So we get this answer delta ux into vx. ओके, सो इस तरह से हम हर एक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. या पद्धतीने प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हे चारही प्रॉब्लेम तुम्ही व्यवस्थित सॉल्व करा. ओके, तर अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे. ओके राइट, मैं अभी होमवर्क देता हूं. होमवर्क, राइट डाउन द होमवर्क. Evaluate first delta 4 2 minus x 3 minus 2x 4 minus 3x 5 minus 4x. This is the first, this is the second difference. Delta cube f of x, where f of x is equals to x cube minus 4x cube minus 7x plus 5. Third difference, you have to evaluate delta raised to n e raised to okay 3x plus 5. Delta raised to 4 e raised to 2x minus 3. Fifth, delta raised to 3 a raised to 4x plus 11. And okay, so you have to solve all these problems. Here the interval of differencing is unity. Unity means 1. Interval of differencing is unity. म्हणजे प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग मीन्स h ची व्हॅल्यू किती घ्यायचे, 1 घ्यायचे. सोडवता का रे सर्वांनी प्रॉब्लेम? हे सोडवतात का? सर्वजण हे प्रॉब्लेम सोडवतात का? चला, कोण कोण आहेत ऑनलाईन आन्सर द्या. हे प्रॉब्लेम सर्वच्या सर्व तुम्हाला सोडवायचे आहेत. पाहू द्या मला कोण ऑनलाईन आहेत. You have to all these problems you have to solve. म्हणजे आज आपण काय काय पाहिलं पहा. We have seen one important theorem based on nth differences. And what is the statement of theorem? The nth differences of a polynomial of degree n are constant. This is an important theorem you have studied, and problems based on that theorem series. These are the notes and the problems based on the theorem. यहाँ पे जो भी theorem यहाँ पे डिस्कस किया है, you have to evaluate this. And हर एक प्रॉब्लम में इंटरवल ऑफ डिफरेंशिंग आपको लेना है. इंटरवल ऑफ डिफरेंशिंग you must take 1. Interval of differentiation you must take 1. Okay. ओके, तर या ठिकाणी आपण स्टॉप होऊ. यानंतर बाकीचं लेक्चर उद्याला पाहू. आपलं लेक्चर रोज सकाळी आणि संध्याकाळी रेग्युलर होणार आहेत, लक्षात ठेवा. प्रत्येकाला सूचना आहे, मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग सेशन मध्ये